Hey guys, it's Simran and welcome back to my YouTube channel, and I hope you all are doing well and great. So as you all knows guys that aloe vera gel is how much good for your skin and hairs too. So on that note, I'm going to share 10 different hacks that how you can use your aloe vera gel in different forms. So without further any ado, let's get started. सो बेसिकली गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा जेल, पतंजलि सौंदर्या एलोवेरा जेल। फेशियल हेयर्स एंड आपके हाथों के जो भी बाल होंगे वो आप अगर शेव करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल। यू जस्ट नीड टू टेक सम एलोवेरा जेल एंड आई एम यूजिंग दिस रेजर। So guys, if you have extremely dry skin, so you can use aloe vera gel as a moisturizer too. So just take one vitamin E capsule and aloe vera gel and mix it properly. As a moisturizer too, and it will give you an amazing glow on your face. And so you can use this mixture as a moisturizer if you have extremely dry skin. So you can use aloe vera gel as a spot corrector. So you just need to take one drop of aloe vera gel. If you have so much spots, so you can take more aloe vera gel. I have only one spot on my face, so I am taking only one drop, and just mix one drop of tea tree oil on it. Mix this mixture well, and wherever you have the spots, you just have to apply the one spot, and do not apply the tea tree oil directly on your face. So just apply one spot. That here I have one spot, so मैं वहाँ पर एक spot use करूँगी. So guys, you can try this hack to minimize your spots, and you have to try this hack at night time, क्योंकि night time पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा effect देगा आपके spots कम होने में. So you can try this hack at night. So guys, this one hack is my almost favorite hack. So you can use aloe vera gel for your bushy eyebrows. So you just need to take some aloe vera gel on your brush, and you can just make your eyebrows. It will set your eyebrows for such a long time. So guys, if you are looking for a primer which is costly and budget free, so aloe vera gel is so much good as a primer. So you can use aloe vera gel as a primer also for a very dewy makeup base. So let's see how it works. So just take some aloe vera gel and just apply the aloe vera gel all over on your face. Guys, let's wait to absorb aloe vera gel on your skin, and उसके बाद you can use the foundation.
सो एज यू कैन सी गाइज अभी एलोवेरा जेल मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है एंड नाउ आई विल जस्ट अप्लाई सम फाउंडेशन ऑन माई फेस दैट टू सी दैट हाउ इट लुक्स एंड कैसा होता है इसका ब्लेंड। सो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी, फिट मी फाउंडेशन। मैंने जो फाउंडेशन मेरे फेस पर लगाया है उसका ब्लेंड जो है वो अच्छी तरीके से हो चुका है एंड दिस हैक इज ऑल्सो गुड। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई किया है। सो मैं फाउंडेशन रिमूव करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस एलोवेरा जेल। सो लेट्स सी, you just need to massage your face for 15 to 20 seconds so अभी मैंने अपने फेस पर मसाज कर लिया है एंड नाउ आई विल जस्ट टेक अ वेट टॉवल एंड उससे मैं अपने फेस को वाइप कर लूँगी। सो एज यू कैन सी गाइज मैंने जो अपना मेकअप था वो रिमूव कर लिया है एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉश योर फेस विद द नॉर्मल वाटर एंड वॉट एवर फेस वॉश यू हैव। So this is the simple hack to remove your face makeup. For one more thing you can use the aloe vera gel that is for your lip lightening. So if you have the dark lips problem, so you can use aloe vera gel at night time. Before going to bed you just need to apply some aloe vera gel on your lips. And उसके साथ you just need to take 1 or 2 drops of mustard oil in your belly button and उसके साथ आपको सोना है रात भर एंड ये आपके लिप्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक पिंक और आपके लिप्स पर जो भी पिगमेंटेशन होगा वो कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यू नीड टू ट्राई दिस हैक थ्रू। गाइज ये थी मेरी 8 हैक्स विद द एलोवेरा जेल जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड टाइम सेविंग हैक थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ गुड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक करो, कमेंट करो एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट डज दिस वीडियो इज़ रियली